As I stated, rules to assign oxidation number is very important topic without which we can't go ahead here in the chapter. Even ये चैप्टर का आगे का जितना भी पार्ट है, that is balancing of redox reactions by using oxidation number and बाकी methods, वो समझ में नहीं आएगा unless and until we are thorough with the rules. So today I will repeat again the rules and then we'll have some solutions, some numericals based on that. Rules to assign oxidation numbers. Once again, let's move. Rules to assign oxidation number. Rules to assign oxidation number. Okay, rules to assign oxidation number. Rule number one. Rule number one. The oxidation number ON. ON is oxidation number in short. The oxidation number of hydrogen is always plus 1. The oxidation number of hydrogen is always plus 1 except metal hydrides. Except metal hydrides. And what are the metal hydrides? As like NaH, LiH, MgH2, aluminum hydride, Al2, H6, like that. These are the substances where it is minus 1. So this is the minus 1. The oxidation number of hydrogen is always plus 1, but in case of only metal hydride it is minus 1. तो hydrogen जहाँ कहीं मिलेगा आपको उसका oxidation number plus 1 है, लेकिन अगर वो किसी metal के साथ react होके pure metal and hydrogen, देखिए अभी हम NaOH की बात करते हैं, उसके अंदर सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, उस केस में उसे मेटल हाइड्राइड नहीं कहा जाता. मेटल हाइड्राइड वो सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ मेटल एंड हाइड्रोजन होगा. ऐसे कंपाउंड में हाइड्रोजन का हमेशा -1 होता है. दिस इज द फर्स्ट रूल व्हाट हैज टू बी रिमेंबर वेरी वेल. नंबर 2, oxidation number of oxygen is always -2 except oxygen fluoride OF2 where it is +1. Be clear ना क्या? So oxidation number को मैं यहाँ पे highlight कर रहा हूँ. So we can say this is the oxidation number of oxygen. Wherever we meet with oxygen, its oxidation number is always -2 except oxygen fluoride OF2 is the compound where the oxidation number of oxygen is always +1 because fluorine being more electronegative. इसका पीछे भी reason है. Fluorine being more electronegative, it has always -1. तो इसका -1 होगा तो ऑक्सीजन +2 होगा. ऑक्सीजन का +2 होगा यहाँ पे. OF2, that is oxygen has +2. Hydrogen has -1. So in that sense you can say oxygen always has the oxidation number which is -2 except this oxygen fluoride where it is +2. Number 3, oxidation number. Number 3, oxidation number of metals is always positive. Oxidation number of metals is always positive. किसी भी metal का oxidation number हमेशा positive होता है. तो oxidation number of metal is always positive. किसी भी metal का oxidation number हमेशा positive ही होता है. Fourth, oxidation number of non-metals is always negative. किसी भी non-metal का chlorine, bromine, sulfur, phosphorus, these are the substances which are called as non-metals. आप जानते हो अच्छी तरह periodic table में non-metals कहाँ होते हैं. Oxidation number of non-metals is always negative. हमेशा negative ही होता है non-metals का. Fifth one, oxidation number of halogens is always -1. This is you can say. The oxidation number of halogens. Halogens में कौन-कौन आता है? Halogens में आता है fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. So you can say oxidation number of fluorine, chlorine, bromine, iodine. These are the halogens. So this oxidation number always is negative. The oxidation number always is negative, and that is -1. ये important बात है कि oxidation number of halogens. Halogens is the name, that is sea salt forming element, and halogens is nothing but the 17th group element whose oxidation number is always -1, and that is fluorine, chlorine, bromine, iodine. इनका oxidation number हमेशा -1 होता है except, यहाँ पे exception है, except interhalogen compounds. Except interhalogen मतलब क्या होता है? देखिए ClF3, IF5, these are the substances called as you can say interhalogen compounds. मतलब क्लोरीन फ्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके ClF3 नाम का कंपाउंड तैयार करते हैं. आयोडीन फ्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके IF5 कंपाउंड तैयार करते हैं, लाइक दिस वन. अभी इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
halogens can be positive. So these are the exceptions. यहाँ पे याद रखने की बात है, except मतलब exceptions. इंटर हैलोजन कंपाउंड, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट होकर जो इंटर हैलोजन कंपाउंड तैयार होते हैं, उस कंपाउंड के अंदर हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है. देखिए पहला स्टेटमेंट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इज ऑलवेज -1. हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, लेकिन अगर वो इंटर हैलोजन कंपाउंड तैयार करते हैं तो इसमें किसी हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, होता है, वो सिर्फ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में. दैट इज द एक्सेप्शन. This is what we are seeing here. Sixth rule, what we are seeing. Sixth rule is that the sum total of oxidation number of all elements in a neutral compound must be equal to 0. See, देखिए, neutral compound. There are many neutral compounds. Okay, as like you can say H2SO4. This is a neutral compound. H2SO4. This is, for example, the MNA H2SO4. In case of neutral compound, the sum total of sum मतलब SUM, sum total of oxidation number of each element must be equal to 0. तो आप देखिए उसका रूल का मतलब क्या है. इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, और सबका अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर होगा. हाइड्रोजन का कुछ तो होगा, सल्फर का कुछ तो होगा, ऑक्सीजन का कुछ तो होगा. ये रूल का कहना ये है, अगर हमें तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करते हैं, that must be equal to 0. So oxidation number must be equal to 0. Sum total of oxidation number must be equal to 0 in case of neutral compound. इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. तो दुनिया में जितने सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सारे कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, इनका सम टोटल हमेशा 0 होता है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. एंड सेवेंथ रूल इज दैट इन केस ऑफ चार्ज कंपाउंड, in case of charge compound मतलब कैसा लिखिए, फॉर एग्जांपल SO4 2- या फिर NH4 प्लस, लाइक दिस वन. ये कंपाउंड्स ऐसे ऐसे कई सारे कंपाउंड आते हैं जिसके अंदर यहाँ पे चार्ज होता है मॉलिक्यूल के ऊपर. तो ये SO4 2- SO4 नाम का एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर यहाँ पे 2- आता है, और NH4 यहाँ पे प्लस आ जाता है. ऐसे कई सारे कंपाउंड होते हैं जिनके ऊपर चार्ज आता है, किसी ना किसी कारण से चार्ज आता है. तो इन केस ऑफ दिस चार्ज कंपाउंड, इसमें इस कंपाउंड में sum total of oxidation number of each element must be equal to what? Must be equal to what? जिस तरीके से यहाँ पे देखते हैं हम लोग न्यूट्रल कंपाउंड में sum total must be equal to 0. इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो sum total of oxidation number of each and every element in a molecule in case of charged molecule must be equal to charge present on this one. तो इसका जो सल्फर और ऑक्सीजन का जो sum total होगा must be equal to -2, क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज है. इस केस में must be equal to +1. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मस्ट बी इक्वल टू +1 बिकॉज उसके ऊपर चार्ज उतना है. सो इन केस ऑफ चार्ज कंपाउंड, the sum total of oxidation number of each and every element must be equal to charge present on the molecule. Must be equal to charge present on the molecule, and this is what we get here rule. So all these are the rules. So everyone, please learn all these rules. ये रूल्स लर्न करने ही करने किसी भी हालत में, बिकॉज ये रूल्स अगर लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इसी के आधार पे हम लोग पूरा का पूरा काफी सारा टॉपिक यहाँ से आगे डिस्कस करने वाले. सो ये जरूरी है और एक्सपेक्टेड है कि एवरीवन अमंगस्ट यू विल गो थ्रू दिस रूल्स एंड मस्ट लर्न दिस रूल्स. सो मैं आपको एक 5 मिनट का वक्त देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप में से सारे, आई वांट ओरल फ्रॉम योर साइड, हर एक के रूल्स लर्न होने चाहिए, उसके सिवाय आगे नहीं जा सकते हम लोग. सो प्लीज, और कोई रूल नहीं समझा तो लेट मी नो. कम ऑन, learn all the rules. Yes, thank you those who have interacted and expressed their opinion given the rules. Let's move to the next slide now. We have some questions. मतलब इसी rules के आधार पर questions होते हैं. Question ऐसा होता है, देखिए आप लोग, there is a question. Calculate oxidation number of sulfur in H2SO4. Okay, this is the question. Question क्या दिखेगा? Calculate the oxidation number of sulfur in H2SO4. इसका मतलब ये है H2SO4 कंपाउंड के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सॉल्यूशन देखिए. सॉल्यूशन मैथमेटिक्स में जनरली हम यही करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको हम लोग x मानते हैं. यही भी करेंगे. So consider the oxidation number of sulfur is X.
oxidation number of sulfur is X. ON is oxidation number of sulfur is X in H2SO4, ऐसा हमने माना. Now सबसे पहले देखिए कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड न्यूट्रल है कि चार्ज्ड है. H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब दिस इज द न्यूट्रल कंपाउंड. तो हमारा जो सेकंड लास्ट रूल था वो लागू होता है, और उस रूल के हिसाब से ये होता है कि sum total of oxidation number of each and every element must be equal to 0. Sum total of oxidation number of each and every element must be equal to 0. But before proceeding to that, one important thing has to be remembered, recalled, or understood, that this is the hydrogen. H is the notation for the hydrogen. 2 indicates the number of atoms. S is the notation for sulfur. O is the oxygen, and 4 is the number of atoms. तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताते हैं या नंबर ऑफ एटम्स को बताते हैं. आगे कुछ नहीं, मतलब मॉलिक्यूल्स का कोई सवाल नहीं आता है. राइट साइड में इसलिए नंबर ऑफ एटम्स. So this 2 is for hydrogen, 4 is for oxygen, like that. So that number of atoms has to be considered. तो अभी देखिए, we have to make the equation based on that. Therefore, सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन. सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा ये होता है. देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, oxidation number of first element into its number of atoms. Number of atoms, ये पहला ब्रैकेट. देखिए पहला ब्रैकेट क्या है? Oxidation number of first element. Oxidation number of first element. So we are here oxidation number of first element into number of atoms plus second element. Second element into its number of atoms plus third element. And that must be equal to 0 plus third element. Third element मतलब पूरा लिखना है. Oxidation number of third element into its number of atoms must be equal to 0. इसके अंदर तीन ही एलिमेंट्स है. H2SO4 के अंदर तीन एलिमेंट दिखता है, हाइड्रोजन दिखता है, सल्फर दिखता है और ऑक्सीजन दिखता है. तीन एलिमेंट्स है. तो यहाँ पे तीन ब्रैकेट बनेंगे. पहला ब्रैकेट फॉर फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा ब्रैकेट फॉर सेकंड एलिमेंट, तीसरा ब्रैकेट फॉर थर्ड एलिमेंट. एंड लिखा क्या है? कॉमन है. Oxidation number of first element into its number of atoms. Oxidation number of second element into its number of atoms. Oxidation number of third element into its number of atoms must be equal to 0. 0 क्यों? Because ये neutral compound है, इसलिए 0. Okay. Therefore, first element कौन है? हाइड्रोजन. और रूल के हिसाब से oxidation number of hydrogen is always +1 except metal hydrides. So I will write +1 for hydrogen into number of atoms of hydrogen. Hydrogen के number of atoms यहाँ पे 2 दिखते हैं. So 2. This is the first bracket. So first bracket में +1 is the oxidation number of hydrogen into its number of atom 2 plus second bracket, second element के लिए, second element is sulfur. Sulfur का oxidation number हमें पता नहीं है, हमें calculate करना है, and that is what we have considered x. X into number of atoms 1. Sulfur के आगे इधर left right में कुछ भी नहीं है, so that's why number only one atom is present. ये दूसरा bracket हो गया. Plus तीसरा bracket में तीसरा element, sulfur के बाद oxygen है. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है. इनटू इट्स नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 है. मस्ट बी इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी हैव फॉर्म बेस्ड ऑन द रूल्स. रूल्स के आधार पर देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है इनटू इट्स नंबर ऑफ एटम्स, और दोनों ब्रैकेट बीच में प्लस है. दूसरे ब्रैकेट में सेकंड एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने x माना है कैलकुलेट करना है, इनटू इट्स नंबर ऑफ एटम 1 प्लस तीसरे ब्रैकेट में तीसरा एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन into number of atoms 4 must be equal to 0. बस इक्वेशन बनने के बाद इसे सॉल्व करना है, बस सिंपलीफाई करना है. तो ये आ रहेगा 2 into 1 is 2 and that is +2 प्लस. ओके, प्लस. आप ब्रैकेट में भी रख सकते हो, उसे कोई टेंशन नहीं. ब्रैकेट रखना तो ब्रैकेट में रखिएगा. +2 प्लस हियर x प्लस ये ब्रैकेट में 2 4 जा -8 must be equal to 0. must be equal to 0. ये बघा, अभी ब्रैकेट हटा देते हैं. So here is +2 मतलब 2 plus x minus plus minus minus 8 must be equal to 0. Okay, ये प्लस भी प्लस है तो यहाँ पे नहीं लिखा जाए. अब ये 8 और 2 ये प्लस है या माइनस है, तो it will become x minus 6 is equal to 0. So x is equal to +6. So this is the value of x. This is the value of x. तो है क्या? What is x? We have considered x is the oxidation number of sulfur. तो नीचे रिजल्ट आता है. Hence oxidation number of sulfur in H2SO4 is +6. ये लिखना जरूरी है. +6. Oxidation number of sulfur in H2SO4.
सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर H2SO4 के अंदर +6 है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है, और इसीलिए लिखना जरूरी है. Hence, oxidation number of sulfur in H2SO4 is +6. Clear with this? Everyone got this one? Okay, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, और ये तो अभी हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे कर रहे हैं. आगे जाके हमें सारे न्यूमेरिकल्स ओरली करने की आदत होनी चाहिए, इसलिए सारे रूल्स पता होना जरूरी है, प्रैक्टिस होना जरूरी है. Hope everyone got this numerical? Numerical क्या था? Calculate oxidation number of sulfur in H2SO4. So what we have done? Solution. Consider oxidation number of sulfur is X. Oxidation number of first element is into number of atoms plus oxidation number of second element into number of atoms plus oxidation number of third element into number of atoms must be equal to 0. Why must be equal to 0? Because it is a neutral compound. So as per the rules. And just we have simplified the things. Got the answer? Okay. Now let's come to next second example. Second example. Calculate oxidation number of nitrogen in HNO3. कंपाउंड देखिए, HNO3 के अंदर नाइट्रोजन का भी कैलकुलेट करना है. मतलब ऐसा करूंगा मैं, कंपाउंड दिया है HNO3 और इसके अंदर N इज इक्वल टू हाउ मच, ऐसा पूछूंगा मैं. ठीक है, लिखने का तरीका है, हर टाइम मैं ऐसा नहीं लिखूंगा कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3. मैं सिर्फ लिखूंगा HNO3 में N का कितना. मतलब ये सिंपल तरीका है, एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3. तो HNO3 के अंदर नाइट्रोजन का कितना है, तरीका यही है. तुम इसे जो सॉल्व कर सकते करें, मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. सॉल्यूशन में क्या आएगा? कंसीडर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू X. सो देयरफॉर रूल के हिसाब से पहला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता कितना है? +1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स इज 1 प्लस दूसरा नाइट्रोजन का हमने X माना इंटू नंबर ऑफ एटम इज 1 प्लस तीसरा -2 इंटू 3 must be equal to 0. Must be equal to 0. So therefore, यहाँ पे 1 plus x minus 6 is equal to 0. So x minus 5 is equal to 0. S is equal to plus 5. Hence, oxidation number of nitrogen in HNO3 is +5. This is the answer. This is the answer. Hope everyone got this. Hope everyone got this. How to calculate the oxidation number of any of the particular element in this compound. So this is the example of HNO3. Yes, is there any doubt to anyone? Hope everyone got this or getting this. Clear with this? Take a screenshot या फिर write down. और expect करता हूँ कि अभी सब लोगों के पास थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेन भी होगा. अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पेन भी होगा. Now let's move to next numerical. अभी NH4 plus N is equal to how much? अभी देखिए, ये एग्जांपल, इसके अंदर भी नाइट्रोजन का कैलकुलेट किया HNO3 में, ये भी एग्जांपल है. ये एग्जाम पढ़ेंगे कैसा? कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 plus. तो दिस इज NH4 plus. ओके, सो इसके अंदर वापस वही होगा सॉल्यूशन. दिस इज क्वेश्चन एंड वी हैव योर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या होगा फिर? कंसीडर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू X. सो देयरफॉर नाइट्रोजन X into 1 प्लस दूसरे ब्रैकेट में हाइड्रोजन का होता है +1 into 4 must be equal to, here must be equal to +1. This is not equal to 0. पहले दोनों एग्जांपल में हमने इक्वल टू 0 किया था, इसके अंदर 0 नहीं, बिकॉज़ इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है. So we have taken a charge. So therefore X plus 4 is equal to +1. Therefore X is equal to +1 minus 4. Therefore X is equal to -3. Hence, oxidation number of nitrogen in NH4 plus is -3. -3. Yes, everyone getting it or not?
Is there any difficulty, anyone? Please let me know. Please write this one. Okay. अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको जो आप घर में सॉल्व करेंगे. कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, क्योंकि अभी जितने मैंने सॉल्व किए सारे उसी तरीके से सॉल्व करना है. अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जो आपको घर से सॉल्व करना है. दिस इज होमवर्क. ओके, तो आप देखिएगा. 3 रहा है. फोर्थ Na2S2O8 O8 sulfur is equal to how much? Fifth, NH3 N is equal to calcium carbonate. CaCO3 is equal to how much? Sulfur is equal to how much? Ten. N is equal to how much? 11. Certain things example बताओ ना, blur हो रहा है उधर. हाँ बता. हाँ 10th जो ऊपर लिखा है लाइट का प्रॉब्लम है ना वहां पे. ठीक, 10 को मैं यहाँ पे लिखा हूँ. इससे 10 करता हूँ मैं. 11 करता हूँ. Into O3, N is equal to how much? 12. Into O4, N is equal to how much? 13. SO4, 2 minus, S is equal to how much? Okay, okay. So these are the examples. What I have written on the boards. Try yourself at the home. Okay, everyone. Take a snapshot. Yeah, if just write it down and solve this one. This will give a perfect or good practice for this one. So that's all from my side. See you tomorrow. Just copy it down. Yeah, either take a screenshot. Thank you. See you tomorrow then. Done, everyone? Take a screenshot. Thanks. Bye-bye.